recording. Yes, we've started recording. Can I get a Gucci? Gucci. Okay, let's start. Nobody's writing Gucci in the chat box. Oh my god, you guys are so lame. Wow. I said Gucci. I never said an applause, Mustafa Saab. Gucci. Okay, let's start. Okay, thank you very much. Thank you. I actually don't like Gucci, LV and Prada. Okay, I'm joking. Let's start. Bangan. Okay. Acid, bases and salts. We started off with this chapter number 7, and we studied a little introduction with regards to what an acid was, what a base was, and at the end of the class I said that a salt is basically any ionic compound. What was an acid? Well, your ancient Egyptians, Greeks and Romans, they categorized acids as all the sour tasting substances, which is khatta. They categorized base as all the bitter tasting substances, which is like your talkh tasting substances, and then there was this scientist, his name was Arrhenius. He came up with the acid base theory, for which he won the Nobel Prize in chemistry in 1903, and he said that an acid is basically any substance which gives the hydrogen ion, or you could say it gives the proton, or you could say it gives the hydronium ion when dissolved in waterino, right? And base was actually any substance which ionized into the hydroxide ion, or which gives you the hydroxide ion when dissolved in waterino. And he said that bases are mostly metal oxides and metal hydroxides. And there was this other term that he used, which was known as an alkali, and alkalis were basically your bases, but they were soluble bases. So soluble bases are known as alkali. Remember, that's the difference between base and alkali. Bases are all metal oxides and metal hydroxide, but soluble metal oxides and metal hydroxides are known as alkalis. What do I mean by soluble? The metal oxides and metal hydroxide that dissolves in water, the bases which can dissolve in water, are known as your alkalis. Yes. And this was the basic concept of an acid and base. And then we also studied dissociation equations, and the way you wrote dissociation equation was very simple. You have an acid, HCl, you dissolve it in water, it gives you the hydrogen ion and the chloride ion, right? If you have H2SO4, you dissolve it in water, it gives you the hydrogen ions and the sulfate ions. If you have like your HBr, you dissolve it in water, it gives you the hydrogen ion and the bromide ion, right? And obviously they're all aqueous, which means they've all been dissolved in water. Ions बनेंगी तब ना जब पानी में dissolve होंगे. So they're all aqueous, and so on and so forth, right? This was basically the dissociation equation. And we said you could also write the dissociation equation as HCl. It goes into the H plus ion and the Cl1 minus ion, but this H plus ion does not exist for a very long time. It further reacts with the water which is present, and that gives you basically your hydronium ion, right? So that's why we said that you could also write the equation for dissociation as HCl giving you H3O plus chloride 1 minus. This is what happens in reality, but scientists wanted to simplify it, so that's why they just write the H plus ion. But we know that the H plus ion does not exist for a very long time, right? It's just there for a split second. And if we talk with regards to a base, Arrhenius said that base is any substance which gives you the hydroxide ion when dissolved in water. So like sodium hydroxide, when you dissolve it in water, it gives you the sodium ion and the hydroxide ion. If you have potassium hydroxide, you dissolve it in water, it gives you the K plus ion and the OH minus ion. And we know these are our ionic compounds, right? And that is the reason why ionic compounds conduct electricity. Chemical bonding, chapter number 3. Why do ionic compounds conduct electricity? Anybody? Why do ionic compounds conduct electricity in molten and aqueous state? Not in solid state. In solid states, they don't have any free moving ions.
But yes, in molten or aqueous state, they have free moving ions, and this is basically a proof to it. So sodium hydroxide, since it's an ionic compound, if you dissolve it in water, it is going to conduct electricity, and the reason for it is because it will have free moving ions. Why will it have free moving ions? Because this ionic lattice breaks down in water. Why does it break down in water? It's because of polarity, not a part of your course. We've touched upon that a little in chemical bonding. Yeah, so this was the definition of base, and this was the definition of acid. All the acids had the H plus ion in common, and that is the reason why they were tasting sour according to Arrhenius, and all the bases were giving you the hydroxide ions, and that's why they were all slippery and all of that stuff. That's why your soap is actually made up of bases like potassium hydroxide or sodium hydroxide. The Windex, which you use to clean the mirrors with, that's also made with like your sodium hydroxide or potassium hydroxide. You also use sodium hydroxide, concentrated sodium hydroxide, for sewage cleaning. And there are many other uses, a lot of uses for bases and acids. Your entire body works on the mechanism of acids and bases, and anybody who gets the theory of acid bases correct at a higher level, he can discover so many new molecules and so on and so forth, right? The importance of acid bases is very vital in your day-to-day lives, right? And then when we were ending, and your ocean water is also, जो ocean water के ऊपर वो झाग सी बनती है, that is because ocean water is more towards the base side, it's more towards the alkaline side, इसलिए उसके ऊपर झाग बन रही होती है, वो soapy झाग सी थोड़ी बन रही होती है. So that's basically because of the sodium hydroxide ions, that's because of the hydroxide ions present in it. Sir, ये अभी तक रिविजन ही हो रही है? हाँ, अभी तक रिविजन हो रहा है. अब नई बात पढ़ते हैं. When I was ending the class, I said that whenever an acid reacts with a base, they undergo a neutralization reaction, which means that it gives you salt and water. What is a neutralization reaction? When an acid reacts with a base, it gives you salt and water. This reaction is actually known as the neutralization reaction. How does this happen? Well, before we study how this happens, and what was salt? Salt was basically any ionic compound, right? But before we study this reaction, I need to give you guys further details with regards to what an acid is and what a base is. And that detail goes something like this. As time progressed, Arrhenius acid-base theory was challenged to some extent. It wasn't challenged, but it was a little incomplete. And the reason why it was incomplete was because there was this scientist, his name was Bronsted, and then there was another scientist, his name was Lowry, and they performed an experiment where they used hydrogen chloride and they used ammonia, and they actually underwent an acid-base reaction, and they were astonished. According to Arrhenius, should they undergo an acid-base reaction? Should they undergo a neutralization reaction according to Arrhenius? Well, according to Arrhenius, they should not act, the HCl gas should not act as an acid, the NH3 gas should not act as a base, and they should not undergo this neutralization reaction to give you salt and water. But they actually did. Then Bronsted and Lowry thought to themselves, hey, hold up a minute. Arrhenius said that an acid is any substance which gives you the hydrogen ion when dissolved in water. Base is any substance which gives the hydroxide ion when dissolved in water. Can you guys tell me, am I blind or is there something missing? Water is missing in this reaction. These are gases. There isn't any water present. How can they undergo an acid-base reaction? How can HCl act as an acid? How can NH3 act as a base? There is no water. Therefore, they said, okay, Arrhenius, you were right with regards to water-related reaction, but an acid-base reaction can also happen without water. That's why we are going to modify your definition, and we are going to say that an acid is basically any substance which is a proton donor. Any substance which is a proton donor, or which is a hydrogen ion donor, which is a proton is basically a hydrogen ion, right? So proton donor. They said it's not just limited to water, Arrhenius.
It can be, but Arrhenius said that an acid is any substance which is a hydrogen ion donor, which gives the hydrogen ion when dissolved in water. They just cut the dissolved in water bit. They said, it's just a hydrogen ion donor because this reaction actually takes place without water. And therefore, they also defined base as, instead of defining base as any substance which gives the hydroxide ion when dissolved in water, they just defined it opposite to an acid. They realized that a base is basically any substance which is a proton acceptor. And how did they come across this definition? I'll prove it to you from Arrhenius definition as well. Basically, उन्होंने जब ये reaction देखा तो ये reaction कुछ यूं हुआ. They took HCl and they reacted it with NH3, and an acid-base reaction took place. And the way it took place was HCl, it acted as an acid and it gave because it donated the hydrogen ion. And which substance accepted the hydrogen ion? Which substance is accepting the hydrogen ion? HCl is donating the hydrogen ion and NH3 is accepting the hydrogen ion, and that's why an acid-base reaction is taking place. That's why so does it mean कि अगर base gas भी होगी तो reaction हो जाएगा? जी जी बिल्कुल. That's what it means. So HCl gas है, NH3 gas है, and HCl is basically the hydrogen ion donor. So what does that make NH3? That makes NH3 the hydrogen ion acceptor. Any substance which is a proton acceptor, सिर्फ acceptor लिखा है, proton acceptor or the hydrogen ion acceptor. So how will the equation look? Anybody? How will the equation look? देखें, HCl है, 1H plus ion goes to NH3. Add करें, simple mathematics, add them. Actually it's not like this, लेकिन O levels IGCSE में coordinate bonding नहीं है ना, तो इसको बस add करें, add. NH3 में H plus add करें, क्या बनता है? NH4 1 plus, right? NH4 1 plus बन रहा है ना, एक H आ गया और उसके ऊपर plus आ गया top पे. That's how I make you rote learn stuff and give you the concept. That's like rote learning. लेकिन ठीक है, conceptually बस add करिए. And HCl, because it lost a hydrogen and अब सिर्फ Cl रह गए, तो Cl के ऊपर क्या charge होगा? What will the charge on Cl be? Cl is in group 7, so it will have a 1 minus charge, right? अब तो -1 नहीं क्या, अब तो redox भी पढ़ लिया, अब तो आपको पता है कि it's 1 minus not -1. -1 is the oxidation state. लेकिन चलिए सही है, कोई मसला नहीं है, -1 भी ठीक है, चलता है. But yeah, that's how this reaction took place. Or is this not an ionic compound, everybody? Is this not an ionic compound? एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, they are both opposite in charge. Will they not attract each other according to physics? Physics क्या कहते हैं? Unlike charges attract or repel? Unlike charges attract, so they are going to actually form a bond, an ionic bond. तो ammonium chloride बन जाएगा. Yeah, ammonium chloride बन जाएगा. So that's this is actually the definitions that we are gonna write in our paper. Definition for CIE. We are not gonna write Arrhenius definition. Yes, but you need to know Arrhenius's definition because that is tested in MCQs. And sometimes it says, oh, acid is any substance that donates a proton when dissolved in water. Yes, it is. Arrhenius की बात गलत नहीं है, but it's just limited to water, right? लेकिन if you want me to prove this, मैं आपको जरा ये चीज जरा प्रूव करना चाहता हूँ. सर इधर तो बेस में उसने हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं की, ये क्या है, ये कैसे जरा प्रूव करके दिखाए ना हमें, ये क्या मतलब है इसका. अगर अर्हीनियस की डेफिनेशन देखें तो अर्हीनियस ने क्या कहा था? HCl, अगर आप इसमें पानी ऐड करते हैं तो क्या होता है? When you add HCl to water, what happens? It gives you the H plus ion and the Cl1 minus ion. That's why it is like an acid. Ain't that true? अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिखूं HCl और फिर ये H प्लस आयन जो है ये फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करता है टू गिव द हाइड्रोनियम आयन. Isn't that true? Isn't that true? तो असल में क्या हो रहा होता है? This is the real reaction and this is the reality of the reaction कि HCl में अगर आप पानी ऐड करें तो H3O1 प्लस बन रहा है और Cl1 माइनस बन रहा है. Do you all agree with me on this? फिर मैं प्रूफ करता हूँ कि ब्रॉन्स्टेड लोरी भी ठीक थे, उन्होंने अर्हीनियस भी ठीक है. अर्हीनियस की बात को मैं बैकअप कर रहा हूँ. डू यू गाइज अग्री विद मी ऑन दिस बिट?
हालांकि मैंने कहा था यू आर नॉट सपोज टू राइट इट लाइक दिस, आप लोग सिंपल ऐसे ही लिख लें, ठीक है. बट डू यू ऑल अग्री ऑन दिस? कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू डू? ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में. इफ यू गाइज अग्री विद मी ऑन दिस, ये मैं अर्हीनियस की डेफिनेशन कर रहा हूं और मैं प्रूव कर रहा हूं कि अर्हीनियस गलत नहीं था. क्योंकि अगर अर्हीनियस की डेफिनेशन को देखो तो अब HCl को जरा गौर से देखिए. HCl रिएक्टिंग विद H2O गिविंग यू दी H3O, कल का मतलब है फ्राइडे ना यार, आमना फ्राइडे, गिविंग यू दी H3O 1 प्लस एंड द Cl 1 माइनस. ये मैं कह सकता हूं कि HCl डोनेटेड एन H प्लस आयन, कह सकता हूं. और पानी ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तभी तो यू गॉट H3O 1 प्लस एंड देन यू गॉट अ Cl 1 माइनस. तभी तो ये हुआ है. HCl डोनेटेड दी H प्लस आयन एंड पानी ने एक्सेप्ट किया. सो दिस इज द एसिड इन दिस केस एंड पानी इज द बेस, इज एक्टिंग एज द बेस इन दिस केस. This is acting as an acid, this acting as a base. तो Arrhenius ठीक था. A base is a hydrogen ion acceptor, right? And an acid is a hydrogen ion donor. So a base is a proton acceptor. The what's it called? A base is a proton acceptor, and an acid is a proton donor. And you can see it right here. राइट. तो अर्हीनियस भी ठीक था और ब्रॉन्स्टेड लोरी भी ठीक है. ब्रॉन्स्टेड लोरी के साथ आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते. अगर मैं आपको कहूँ H2SO4 है, इसको आप पानी में डिसॉल्व करें तो आप इसकी डिसोसिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं जो अर्हीनियस ने कहा था. बिल्कुल ठीक है. डिसोसिएशन आपने अर्हीनियस की तरह ही शो करनी है जो हम कल से सीखते आ रहे हैं. लेकिन वन ऑफ यू गाइज माइट आस्क, सर अगर मैं फुल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख लें H2SO4 प्लस H2O, या इसको आप यूं लिख ले, either write it like this, you know, or you could literally write it by using the Bronsted-Lowry acid base theory. करें जी, ये acid है तो what is it gonna do? It's gonna donate the H plus ion. तो करें donate, H3O plus बन जाएगा, प्लस पीछे क्या रह जाएगा? एक हाइड्रोजन आयन चला गया, पीछे क्या रह गया? HSO4, am I right? एक H प्लस चला गया, HSO4 रह गया पीछे, एक HSO4. अच्छा, ये H2SO4 में when the hydrogen ion was going, it took away a plus charge with it. तो इधर क्या रह जाएगा? If it took away one plus charge with it, तो इधर ओवरऑल क्या चार्ज रह जाएगा? मैंने आपसे पॉजिटिविटी ले ली, एक पॉजिटिव मैंने आपसे ले लिया. What does that make you? What does that make you? No, if I'm taking away the positive, that makes you negative. So this is HSO4. If I'm taking positivity out of your life, that makes you more negative, right? And the way, this is just like the logical understanding behind it, right? कि H plus एक चला गया तो इधर एक 1 minus रह जाएगा. But if you take into consideration the concept of balancing, which we've already studied in redox, अगर balancing की बात करें तो हमने charges पढ़े कि the charges on the left and right hand side must be equal. Left hand side पे 0 charge है, right hand side पे 1 plus charge है, तो HSO4 पे क्या charge होना चाहिए? 1 minus ना, to balance the equation on the left and right hand side. हमेशा एक ही हाइड्रोजन आयन डोनेट होगा नहीं. आमना हाइड्रोजन आयंस तो बिलियंस एंड बिलियंस हाइड्रोजन आयंस डोनेट होते हैं. हम तो इक्वेशन में शो कर रहे हैं ना. 1 H प्लस आयन का मतलब ये एक्चुअली 1 मोल है ना. तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं? 6.02 into 10 raised to the power 23. We're just showing कि H प्लस आयन डोनर है. Adina, what don't you understand in this? This is, you just have to write this in the paper. H2SO4 था, पानी में add किया, you got this. That's the equation that you write in paper. I'm just proving the fact कि आप Bronsted-Lowry को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Bronsted-Lowry ने कहा H plus उठा के इधर डाल दो. This is an acid is a hydrogen ion donor. It's a proton donor. तो अगर proton ये donate करेगा तो पानी accept करेगा ना, तो पानी becomes the base. तो बस सिर्फ इसको लिखना है. H plus में H2O में H plus add करें, you get H3O1 प्लस, और इधर से एक H प्लस निकल गया, सो यू गेट एक हाइड्रोजन कम हो गया तो HSO4 रह गया, और प्लस भी चला गया तो ये बेचारा एक नेगेटिव रह गया, which is shown right here. So you can write the dissociation equation either like this or like this, which is more preferred by your examination. So this is better. I'm just proving you guys. I'm just proving things to you guys, right? अच्छा, उसके अलावा, अच्छा अगर मैं कहूँ HCl
की डिसोसिएशन लिखें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, H प्लस प्लस Cl1 माइनस, राइट, एक्वस, पानी में डिजॉल्व हो गया। और अगर मैं कहूँ नहीं मुझे ब्रॉन्स्टेड लोरी से लिखा, आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस द डिफरेंस। ये फिर बाद में ये H प्लस आयन पानी के साथ रिएक्ट ही करते हैं ना, लेकिन ये हम शो नहीं कर रहे, ये पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस 1 प्लस बना रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली शो करें तो ब्रॉन्स्टेड लोरी को इस्तेमाल करें ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा दिस इज़ अ प्रोटॉन डोनर, तो H प्लस इससे डोनेट करें तो यू गेट H3O1 प्लस प्लस Cl1 माइनस। आई एम जस्ट शोइंग यू बोथ आर द सेम थिंग, this and this is the same thing and the same things. I'm just developing the concept. तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की कहानी थी। इसमें से ज़रूरी बात सिर्फ ये थी कि इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बाकी तो मैं प्रूफ्स कर रहा हूँ आपको कि दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, चारों सही हैं। ओके, the other thing that you need to know is Bronsted Lowry they weren't even that good of scientists. They were actually pretty good. But there was another scientist who said, Bronsted Lowry, I am actually at a higher level. I am studying chemistry and I'm like a post PhD. His name was Lewis. Lewis was a dude who said that your definition is also limited to certain extent. फिर Lewis ने अपनी कहानी डाली which actually encompasses all the definitions. तो ये तीनों definitions को in contact in an umbrella लेती है. So Lewis की जो definition थी acid basis की, that is far more versatile than Bronsted की जो definition थी। Bronsted की इधर आ गई, ये बी हो गया, और फिर अर्हीनियस की इधर आ गई। तो अर्हीनियस की थोड़ी सी लिमिटेड थी पानी तक, ब्रॉन्स्टेड की लिमिटेड थी टू H प्लस आयंस, और लुइस ने फिर जो डेफिनेशन की तो उसमें ये दोनों कवर हो गए थे। और लुइस की क्या डेफिनेशन थी मैं लिखूंगा, समझाऊंगा नहीं, आपके कोर्स में नहीं है। लुइस ने कहा था एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये जो बात इसने कही थी ना, बस ये अखीर थी। दिस वॉज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस जिससे हर डेफिनेशन कवर होती है, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MCQ में हम तो जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड होते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड जब हम करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा MCQ गलत है, गलत के पीछे लॉजिक भी हम जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यू नो, एंड यू गाइस फाइंड दैट ईजियर। वही हमने पेपर में करना है। तो पेपर में एक दफ़ा ये टेस्ट हो गया था कि अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, नो इट्स एन एक्सेप्टर। अकॉर्डिंग टू लुइस एज बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, नो इट्स अ डोनर, राइट। तो ये लुइस की उल्टी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्टेड है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। A लेवल्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, A2 में बल्कि। ओके, अब ये सारी कहानी तो ये सिर्फ बस लिख लें अपने पास, जस्ट नो दिस, डोंट गो इनटू द फैक्ट कि वाई। मैं इधर भी प्रूफ कर सकता हूँ कि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स की गेम हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स की गेम हो रही है, बट आई एम नॉट गोना प्रूव इट टू यू गाइस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ओके, जस्ट राइट इट डाउन विद योरसेल्व्स। ओके जी, नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज क्लास। आधा घंटा रह गया और टुडेज क्लास में अभी कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इक्वेशंस नहीं कराने, कल से कराने, आज मैंने आपको थोड़ी और कहानी सुनानी। द प्रॉब्लम विद एसिड्स एंड बेसिस वाज दैट there was a scientist like Adina और सिद्रा और माहा और मुस्तफ़ा, उनका एक ही तरह एक साइंटिस्ट था, थोड़ा सा नलायक सा। सॉरी गाइस, यू गाइस आर ऑल वेरी स्मार्ट, प्लीज डोंट कैंसिल मी। तो उनकी तरह एक साइंटिस्ट था, उसने ना रात को एसिड बनाया, उसने रात को बेस बनाया। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। ये कोर्स तो कहियों में ही ख़त्म हो गया, कहानियों में ही ख़त्म हो गया, देख लें हम ना, दैट्स हाउ गुड आई एम। अच्छा, तो एसिड है, बेस है। आपकी तरह उसने एसिड बेस बनाया, वो रात को सोने चला गया। जब वो दैट्स नहीं ऐसे जोक्स हम नहीं करते सिद्रा, यू नॉट ओके, आई वोंट इवन से इट ऑन द माइक, इज रिकॉर्डिंग हो रही, प्लीज डोंट जोक लाइक दैट, ओके। अच्छा, तो एसिड था, बेस था, आप लोगों की तरह उसने बनाया। And what he did or what you guys did was you guys did not label it, और आप सो के चले गए। जब आप सुबह उठे यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, आई डोंट नो। आपने एक में ऐसे आपने टेस्ट करने के लिए ना अपनी उंगली इसमें ऐसे डाल दी, एंड इट बर्न्ड योर हैंड, एंड यू नो योर एंटायर स्किन वाज बर्न्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने कहा ओ माय गॉड, ये क्यों हुआ मेरे साथ, व्हाई मी। सो आपका लैब असिस्टेंट था, उन्होंने कहा सर आपको पता नहीं कि एसिड बेस दे आर बोथ कलरलेस, all acids and non bases are colorless, you should have labeled it while you were going to sleep, are you dumbo?
Why did you not label it which one was an acid, which one was? उसने कहा मैंने तो साबुन बनाना था बेस से और मेरी तो उंगली जल गई, मुझे तो क्या पता था. So you guys actually ended up burning your hands. फिर मेरी तरह एक साइंटिस्ट आया, मैंने कहा यार मैं सोल्यूशन इसका बना देता हूँ, कोई नहीं, I'll give you guys the solution for this problem, and that solution was the birth of an indicator. I said कि यार the problem with acids and bases is that they are both colorless, right? So I came up with this solution and I made a chemical substance which is known as an indicator, which has a different color in an acid and a different color in a base. And that's how you could actually differentiate between the two. And we've studied indicator and indicators in moles and stoichiometry. So I'm not going to repeat myself, but चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. So I made certain indicators जो आपको आने चाहिए, like methyl orange. मिथाइल ऑरेंज के कलर्स बताएं जी, मोल्स में पढ़े हुए हैं, टाइट्रेशन में पढ़े थे मोल्स में. मिथाइल ऑरेंज के क्या कलर्स हैं? व्हाट कलर डज मिथाइल ऑरेंज हैव इन एन एसिड एंड व्हाट कलर डज मिथाइल ऑरेंज हैव इन अ बेस? Oh, kill me. It's not orange in an acid, man. It's not orange in an acid. It's red. It's red, red, red. Please don't be colorblind. Red and base में yellow है. मैंने आपको कहा था इसको orange लिखा हुआ है, but this actually means yellow. और याद रखें कि मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जिसके साथ जो रंग लिखा होता है वो बेस का रंग होता है. मिथाइल रेड, दिस रेड इज द कलर ऑफ द बेस. तो बेस मिथाइल रेड में बेस का कलर होता है रेड और एसिड का कलर होता है येलो. जैसे कि मैंने आपको, दिस इज सच एन इजी वे. साइंटिस्ट पागल तो नहीं थे ना कि एवी नाम रख रहे थे, उन्होंने एक मकसद से नाम रखा था. जैसे ब्रोमो थाइमोइल ब्लू, ये सारे हमने पढ़े हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ. ब्रोमो थाइमोइल ब्लू, अब ये ब्लू कलर एसिड का है कि बेस का है? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जो बाद में कलर आता है ये बेस वाला होता है. सो ब्रोमो थाइमोइल ब्लू, इसका मतलब है कि बेस में या एल्कली में इट्स गोना बी हैविंग अ कलर ऑफ ब्लू. तो दूसरा तो आपको पता होना चाहिए ना. दैट्स हाउ यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड. एसिड में ये येलो होता है. यस जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की थी फिनोल्फ्थलीन की. अब तो खैर फिनोल्फ्थलीन रिमूव हो गया. फिनोल्फ्थलीन की एक चीज़ शेयर की थी. रिमेंबर आई शोड यू हाउ पीपल कमिटेड फ्रॉड व्हाइल यूजिंग फिनोल्फ्थलीन, वो अंगूठियों वाली. तो फिनोल्फ्थलीन का तो कलर आपसे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये आपके कोर्स में अब नहीं है, पास पेपर्स में होंगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना. या तो वो बेस में पिंक कलर देते, वो चूना लगा के वो कहते हैं दही है, ये वो असल में चूना होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज चूना, लाइम. सो वो लाइम के साथ उसको लगा देते और पिंक रंग हो जाते, कहें ये आपको सूट करती हैं. तो बेसिकली इट्स पिंक इन अ बेस और एसिड में इट्स एक्चुअली कलरलेस. तो कलरलेस इन एन एसिड. और एक और है जो आपके कोर्स में नया नया ऐड हुआ था और मैंने पढ़ाया भी है, थाइमोल्फ्थलीन. फलीन, प्लीज स्पेलिंग गलत नहीं कर सकते आप लोग इसकी. फ इज PH एंड थलीन, थाइमोल्फ्थलीन, phenolphthalein. So thymolphthalein is just like phenolphthalein. It's colorless in an acid, लेकिन it's not pink in a base, it's actually blue in a base. तो बेस में ब्लू है. बेस में आता हूँ. युसरा, आपके सवाल का बहुत मजे का जवाब है. एंड वन लास्ट इनका, हमाद ने पूछा सर बट व्हाई मिथाइल ऑरेंज बेस कलर इज येलो? हमाद, आई डोंट नो, दे वर क्रेजी, दे शुड हैव नेम्ड इट मिथाइल येलो. लेकिन जिस साइंटिस्ट ने ये इंडिकेटर बनाया था उसको येलो की जगह ऑरेंज नजर आ रहा था, तो दैट्स हाउ ही कॉल्ड इट ऑरेंज इंस्टेड ऑफ येलो, बट वी नो इट्स येलो. वो कलर ब्लाइंड था. साउंड्स गुड? अच्छा जवाब है. हर चीज़ का जवाब होता है मेरे पास, झूठी मोटी कहानियाँ सुना के. यस यही है. या ओके, सारी ज़िंदगी ये कलर्स याद करने भी निकाल जाएंगे. इसमें याद करने का क्या है, मतलब कम ऑन. अच्छा वैसे आपके कोर्स में सिर्फ ये है और सिर्फ ये है. मैंने आपको मोज में भी बताया था. ये मैंने इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि ये आपके पास पेपर्स में हैं, तो पास पेपर सॉल्व करते हुए कि फिर आप ये ना कहें सर ये तो नहीं पढ़ा तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी लिखवाया कि पास पेपर में आपको जवाब कम से कम आते हो. ओके, then one other indicator that Sir Suleiman made was called the litmus paper. And this is such a beautiful indicator. You just taste like it has a texture of a filter paper. Red plus yellow gives orange. ये मेरे ख्याल से ये last time भी आपने यही कोई theory लगाई थी कि सर maybe because red and yellow gives me orange, that's why they called it methyl orange. Maybe, Nahar, who knows? That's a very good analogy. इधर मुझे ऐड करने दे यार, ये मैं अपने साथ नोट्स में लिखता हूँ कि कल को बच्चा पूछे तो एक मैं ये लॉजिक पे झूठी मूठी दे दूँ.
wait. Red and yellow gives orange. See, you just had to satisfy the child, you know. कभी कभार झूठी बातें बतानी होती हैं, कोर्स में नहीं होता, मैं क्या करूं? Okay. अच्छा, वैसे मैं हर बात झूठने के, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाँ, all the story about Arrhenius playing around with commas, this was all like fake, you know. I'm making all this stuff up because according to Aristotle, the best way people learn is through visualization, is through stories. तो मैंने तो कैलटेक के कोर्सेज किए हैं टीचिंग पे, इसलिए मैं आपको झूठी मूठी कहानियाँ सुना रहा होता हूँ. कैलटेक और स्टैनफोर्ड के कोर्सेज यूट्यूब पे पढ़ें, आप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट टीचर लाइक मी. ओके, सो लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर बेसिकली आपके पास, आप उसको डैम्प करते हो. सो अगर आप एसिड के लिए टेस्ट करते हैं और अगर आप बेस के लिए टेस्ट करते हैं, सो व्हाट यू डू इज़ यू टेक ए डैम्प ब्लू लिटमस, a damp blue, that's the test. So you take a damp blue litmus, वैसे इसको मैं blue से क्यों नहीं लिख रहा, damp blue litmus, and the acid turns it red. Observation या result क्या है, it turns red. और base के लिए you take a damp red litmus, test it with a damp red litmus, एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इट टर्न्स इट ब्लू. तो बेस रेड को ब्लू कर देता है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. बेसिकली व्हाई एम आई सेइंग डैम्प, डैम्प बेसिकली पानी में उसको थोड़ा सा भिगो देते हैं. क्यों भिगो देते हैं? ताकि आपके पास कांटेक्ट सही आए. कैसे आए, कब आए, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. अच्छा, अब ये सारी कहानी थी. युसरा, आपका बहुत अच्छा सवाल है. ऊपर युसरा ने सवाल लिखा है, सर व्हाई कैंट वी यूज अ बीप बीप. वो बीप बीप मैं बताता हूँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, और उसी पे हम आते हैं. तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो मैंने बनाए. लिटमस पेपर था, मैंने ही बनाया. Yeah, they're opposite to each other. That's how you could remember it. Now, humans actually wanted to explore even further, and they wanted to know how acidic a solution can be or how basic a solution can be, right? So they wanted to know कि ठीक है, मैंने अपनी उंगली तो जला ली, but next time I want to make sure the concentration of this acid, how acidic is this solution, can this actually destroy my entire skin, or is it not that dangerous for me? Can I just, you know, for fun dip my finger in it and feel a little tinge of burning and then I'll be fine, you know? Similarly, I want to check, is this base going to be, what is going to be this the solution, how basic is the solution going to be? I wanted to check whether I dip my hand in it, whether it just, you know, ruin my skin, or will it be very very corrosive, will it peel off my skin? So scientists also wanted to know that. They wanted to explore further. They said, okay, now I know different colors, like if you add methyl orange, if I say कि अच्छा आपके पास एक solution है और उसमें आप methyl orange add करें and the color it turns red, what does this mean? If I test a solution with methyl orange and the color turns red, what does that mean? It means that the solution is basically acidic. But I want to know how acidic is the solution. If I take methyl orange and add it to a solution and the color changes to yellow, I know that it's basic. I know this solution is basic. But how basic is the solution? Scientists wanted to know that, and for that they came up with the pH scale. pH scale is basically the measure of how acidic or basic a solution is. वही तो हम करना चाह रहे थे ना. It's the measure of how basic or acidic a solution is. और ये man made है. ये man made. और इंसानों ने pH स्केल कैसे बनाया? इंसानों ने pH स्केल ऐसे बनाया, they took water as your reference point. आपके कोर्स में pH 1 to 14 है. 1 being the most acidic, 14 being the most basic. And then obviously 7 is in between, that is basically neutral. और न्यूट्रल क्या है?
7 is neutral because they took into consideration, scientists का और कोई काम नहीं था, नहीं ना यार, they wanted to do these experiments. This is neutral, and the reason why it's neutral is because this was a reference point and they took water as their reference point, and not just any water, distilled water, right? तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई आइंस ना हो, क्योंकि जिस पानी में आइंस होते हैं तो वो आइदर स्लाइटली ऑन द एसिडिक साइड होता है, स्लाइटली ऑन द बेसिक साइड है. अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो आप कोई एक्वाफिना की बोतल ले लें, उसमें अगर आप देखेंगे तो आई थिंक इट्स 7.8 और समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ा सा बेसिक साइड पे होता है, यू नो. या नेस्ले की देख लें 7.6 होता है, जो भी है. सो 7 इज बेसिकली द pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर, 1 बीइंग द मोस्ट एसिडिक एंड 14 बीइंग द मोस्ट बेसिक. ये मैंने आपको MCQ के लिए बताया. लेकिन आप 1 से नीचे भी जा सकते हैं, आप 0 में भी जा सकते हैं. pH कैन ऑल्सो बिकम नेगेटिव. रिमेंबर, ये आपके नॉलेज के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि बस 1 है तो बस ये आखिर बात है, ये वो. लेकिन MCQ में अगर कहे कि pH 1 मीन्स द मोस्ट एसिडिक, तो जी बिल्कुल ओ लेवल में यही हमें कहे pH 1 मीन्स द मोस्ट एसिडिक. बट रिमेंबर, इट कैन गो बिलो 1 एज वेल. इट कैन बिकम 0, इट कैन ऑल्सो बिकम नेगेटिव, बिकॉज pH is actually a function. It's a mathematical function, and you'll learn the calculation in A2. You want me to show you how the pH was made? Are you guys interested? I'll teach you how the pH is made. क्लास में 20 मिनट है ना, बस मेरे तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ाना है. और Do you want me to show you how the pH is made? Mahai saying no. Mahai saying no, sir, आप हमें इतना इन्फॉर्मेशन देते, नहीं दिल चाह रहा, ना बताएं. Nobody wants to know how the pH scale was made. It's very easy. Literally, it's very easy. It's gonna help you guys. जाएं अपना काम करें, मैं फिर भी बताऊंगा भाई. मैं फिर भी बताऊंगा, आप ना सुने. कान जो लोग नहीं सुनना चाहते, कान बंद कर दे प्लीज. H2O is actually covalent. It's a simple covalent molecule, right? And this is a concept that you'll learn later on in A2, but the logic is already there. इस concept को कहते हैं auto ionization of water. क्या भला है, गोली मारे auto ionization of water, क्या भला है. मेरे एक सवाल का जवाब दे. If you put naked wires in water and you put your hands in it, will you get electrocuted? Yes or no? अगर आप पानी में हाथ डालें and you put naked wires in it, will you get electrocuted? Absolutely you will. Which means what? Which means के पानी तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? वेल, बिकॉज पानी एक्चुअली गोज अंडर अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. इसका मतलब पानी के अंदर आइंस भी पड़े होते हैं पानी के. इट पार्शली आयनाइजेस. पानी के कुछ आइंस भी होते हैं ना, H+ आइंस और OH- आइंस. इसलिए तो आप जब हाथ डालते हैं पानी में और यू पुट नेकेड वायर्स इन इट, तो यू आर गोना गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड, बिकॉज पानी के अपने आइंस भी होते हैं. ये H+ और OH- कैसे आया? ये H2O टूट गया ना इनटू H+ एंड OH-. तो पानी के अंदर ये आइंस होते हैं, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है. फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर you actually have 0.361. You have these many mole per decimeter cube of hydrogen ions. Moles पढ़ा रहा हूँ. And you have 2, 3, 4, 5, 6. You have these many moles per decimeter cube of OH- ions. अच्छा, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट ने जब पानी पे थोड़ी सी तहकीक की तो उनको पता लगा कि 1 लीटर ऑफ पानी में इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब H+ आइंस है और इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्साइड आइंस है. कोई मुझे बता सकता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷. और इसको अगर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. क्या मैं ये लिख सकता हूँ मैथ गीक्स के लिए? सर 7 और 7 को ऐड करें, व्हाट डू यू गेट? 14. और 7 राइट हियर, 7 7 7 7 7 7 7 right here. Hey, 7 right here. ये pH बेसिकली. अच्छा, अगर मैं कहूँ आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका pH क्या होगा? फन फैक्ट फॉर यू गाइस, यू कैन एक्चुअली टेल मी द pH ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या pH होगा इसका?
बताएं, अगर इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं तो इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब H+ भी होंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रा कन्वर्ट करें, कितना आता है? 1.0 इंटू 10⁻⁻1 1। इसका pH नहीं 2 कैसे होगा? pH 1। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट pHs। हाँ सर, सुलेमान ने आपको pHs भी कैलकुलेट करने सिखा दिए। दैट्स वाई इट्स वेरी एसिडिक। सी हाउ कूल दिस इज, यू नो, आई टोल्ड यू। अच्छा, स्टमक में पानी भी होता है ना, इसलिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या pH होता है? अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ अपनी बात। इसका pH क्या होगा? सोचें ज़रा। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1.0 इंटू 10⁻⁻. 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.0 इंटू 10 इज पावर 0। नो यू डोंट हाजरा, मैं आपको कोई सेंस, नो नो नो। 1.0 इंटू 10 इज पावर 0, 10 इज पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 को मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.0 इंटू 10 इज पावर 0। तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या कॉन्सेंट्रेशन, क्या pH होगा इसका? 0। और मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट इट एज वेल। ज़रा आप कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर में एक फंक्शन है LOG, मोड के नीचे अगर सबके पास कैलकुलेटर पड़े हैं तो मोज। मैं आपके साथ थोड़ी सी फन एक्सरसाइज कर रहा हूँ। You don't need to know to calculate how to calculate pHs. I'm just showing you how this scale was made. थोड़ी सी हिस्ट्री अच्छी होती है ना, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। Don't, those of you who are getting confused by this, गोली मारें इसको। Those of you who are enjoying this, please stay with me. ज़रा कैलकुलेटर में नेगेटिव लगाएं, LOG का एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा, वो डालें और उसमें फिर ब्रैकेट में ज़रा 0.1 डालें, क्या आता है? नेगेटिव LOG में ब्रैकेट में 0.1 डालें, क्या आता है? फिर नेगेटिव लॉग डाल के 1 डालें ज़रा ब्रैकेट में, तो क्या आता है? सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट pHs. इट्स एक्चुअली नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। हु केयर्स? मैंने आपको लॉजिकली बता दिए कैसे होते हैं, वैसे मैथमेटिकली दिस इज़ द फंक्शन। तो ये साइंटिस्ट, ये सारी बात बताने का मकसद ये थी कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से pH नहीं था, ये हमने बस पानी को रेफरेंस के तौर पे लिया और हमने ये स्केल डेवलप किया। बट दैट्स इट, दैट्स लिटरली इट। And then based on this pH, there came a new thing which was known as a universal indicator. उन्होंने फिर एक ऐसा इंडिकेटर बनाया which they called the universal indicator, and this universal indicator is a mixture of dyes that changes color gradually over a range of pH. युसरा, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगे, मैं एंड में जवाब दूंगा because it's a little off topic. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको इट एक्चुअली चेंजेस कलर ग्रेजुअली ओवर अ रेंज ऑफ pHs, राइट? सो इट हैज़ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट pHs एंड दोज कलर्स आर रॉयग बिव। हमने ऐसे याद किया था, किसी ने विब ग्योर याद किया होगा, किसी ने रॉयग बिव याद किया होता। रॉयग बिव, R मीन्स रेड, O मीन्स ऑरेंज, येलो Y मीन्स येलो, मतलब अब कलर्स तो आपको आते हैं। G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू, I मीन्स इंडिगो, V मीन्स वॉयलेट। जो ये ग्रीन है, इट्स बिटवीन रॉय एंड बिव, दिस इज बेसिकली pH 7। और ये बाकी जो है, दिस इज 1 to 7 बट नॉट इक्वल टू 7, और BIV जो है दैट इज मोर देन 7 एंड गोज टिल 14। तो इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड होते हैं, रेड बीइंग द मोस्ट एसिडिक एंड वॉयलेट बीइंग द मोस्ट बेसिक। अगर मैं कहूं कि इसमें अगर मैं HCl डालूं, HCl अगर मैं डालूं 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो क्या कलर शो करेगा मुझे? वैसे red, yes. So because ROY they are more towards the acidic end ना, 1 to 5 pH, 1 to 7 pH sorry, और BIV is 7 to 14, not inclusive of 7. तो ये 7 to 4। अगर मैं इसमें कहूँ कि अगर मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, तो इसका या ब्लू होगा, इंडिगो होगा या वॉयलेट होगा, लेकिन इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, तो ये वॉयलेट की तरफ ही होता है। तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, you need to know these colors. Roic biv, red, orange, yellow. GBIV, green. G means green, it's neutral. अच्छा, जितना मैं रेड की तरफ जाऊंगा will I become more acidic or less acidic? जितना आप रेड की तरफ जाएंगे you will become more acidic. जितना मैं येलो की तरफ आऊंगा
मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक. तो जो एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, विल दे हैव येलोइश कलर और रेडिश कलर? Yellowish color. BIV, B is blue, I is indigo, V is violet. Blue, indigo, violet. मेरा सवाल है, अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक चीज बहुत ज्यादा एसिड होगी, तो वो रेडिश की तरफ होगा कि येलोविश की तरफ होगा? येलोविश, रेडिश? रेड होगा, रेड की तरफ ज्यादा होगा. एक चीज है वो थोड़ी वीक एसिड है, थोड़ा वीक एसिडिक है, वीक एसिड इन नेचर, तो वो येलो की तरफ होगा या रेड की तरफ होगा? येलोविश, ज्यादा येलोविश, ऑरेंजिश येलोविश. अच्छा, अगर मैं कहूं पानी है, बिल्कुल प्योर पानी है, तो क्या कलर होगा? बिल्कुल प्योर. यस, ग्रीन, एब्सोल्युटली नॉट येलो हाजरा, फुल ग्रीन होगा ना, बिकॉज pH 7 इज ग्रीन. 3 लेफ्ट पे, 3 राइट पे और बीच में ग्रीन, इट्स सैंडविच्ड. अच्छा, मैं अगर कहूंगा एक चीज होगी थोड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ब्लू होगा कि ज्यादा वॉयलेट की तरफ होगा? मोर टूवर्ड्स ब्लू और मोर टूवर्ड्स वॉयलेट? मोर टूवर्ड्स वॉयलेट. या यस, एवरीबॉडी इज राइट. और अगर मैं कहूँ थोड़ा कम बेसिक होगा, लेकिन बेस है, लेकिन थोड़ा कम बेस है, तो it will be more towards the blue side. Great, that's all I wanted to teach, right? So you guys must be able to know this. 2-3 बातें शायद क्लास 5 मिनट ऊपर चली जाए, but please bear with me. थोड़े फन फैक्ट्स बताने और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट देने. अब जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, थोड़ा सा वीक एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते क्या है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अब फर्क क्या है? एक तो आपको पता लग गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो कलर क्या होगा? वीक एसिड विल बी मोर येलोइश, स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी मोर लाइक रेडिश. बट द डिफरेंस इज दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट एसिड which fully ionizes when dissolved in water. So are those acids which fully ionizes when dissolved in water. क्या मतलब बताता हूँ, give me a sec. When dissolved in water. Strong acids are those acids which fully ionizes when dissolved in water, and weak acids are those acids which partially ionizes when dissolved in water. क्या मतलब है इसका बताता हूँ. When dissolved in water. Sorry for my writing, guys. दोनों में सिर्फ एक फर्क है, fully ionizes और partially. इसको आप ये भी कह सकते हैं, fully ionizes को आप कह सकते हैं fully dissociates. अब आपकी मर्जी, ज्यादा आसान आपको कौन सा लगता है? fully dissociates its ions. fully ionizes या लिख लें fully dissociates its ions. partially dissociates its ions. दोनों MCQ के लिए दोनों टेस्ट हो सकते हैं, दोनों एक ही बात है. बात क्या है? What do we mean by this? Well, what we mean by this is, if you have HCl, do we know that HCl is a strong acid? I just proved it above. HCl is a very strong acid. pH देखिए 0 आ रहा है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करें 0 pH है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करें 1 pH है. It's a very strong acid, right? So when you add it to water, it's going to fully ionize. अगर मेरे पास 100 molecules of HCl होंगे तो 100 के 100 molecules are going to ionize into H plus ions and the Cl minus ions, and that's why we represent it with a forward arrow. That's why we represent it with this arrow. बिल्कुल फॉरवर्ड एरो. ये पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा. जितना एसिड था, जितना HCl था, सारे के सारा HCl is going to be converted into ions. That's what I mean when I say that they are those acids which fully ionizes when dissolved in water. पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है. पूरा HCl is converted into the H plus ions and the OH minus ions. In the Cl minus ions, right? But weak acids are those acids which partially ionizes when dissolved in water. So if I have a weak acid and I dissolve it in water, it's going to give me the H plus ion. Let's suppose this is a weak acid, right? So it's going to give me the H plus ion and whatever the negative ion is, and because it partially dissociates, I'm going to represent it with a reversible sign. मतलब क्या है? मतलब ये है. अच्छा, एक weak acid की example मैं आपको दूं, आप आगे organic chemistry में पढ़ेंगे. It's CH3COOH. This is your सरका. जो आपके सिरका नहीं होता, सिरका, ये सिरका है. तो सिरका is a weak acid. That's why when you drink सिरका and you use सिरका,
जी बिल्कुल, उसकी डेफिनेशन ही आती है आमना, लेकिन ये इक्वेशंस भी आती हैं पेपर में. तो इफ यू यूज सिरका गाइज, व्हाट विल हैपन व्हेन यू यूज सिरका? विल यू गाइज die when you eat sirka or drink sirka or use it in your salads? No, because it's a weak acid, you know. It's not like HCl. अगर आप HCl पिए तो समझ लें अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप very concentrated HCl पिए. But sirka is a weak acid. Why? Because it partially dissociates when dissolved in water. It partially ionizes when dissolved in water. Partially ionize का मतलब है कि it gives you the H plus ion and it gives you the CH3COO1 minus. ये basically एक negative ion है और ये basically positive ion है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फर्दर आप पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. पार्शियली का मतलब ये है कि अगर आप जनाब वाला पानी में मैं इसको ऐड करूँ तो CH3COH विनेगर को अगर आप पानी में ऐड करें तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ विनेगर आपने पानी में ऐड करें, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ विनेगर आपने पानी में ऐड करें तो आपको पता है कितने आयंस बनेंगे? कितने आयंस बनेंगे? Only 1% are going to dissociate into ions. Only 1% are going to ionize. बाकी 99 जो है ना, they'll remain CH3COOH, 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 CH3COOH. ठीक है, और इनका पीएच आप नहीं कैलकुलेट कर सकते. ये ऊपर वाली कहानी थी, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए थी. प्लीज़, ये दिस वाज जस्ट अ फन एक्सरसाइज. प्लीज़ इनका पीएच आप ए लेवल्स में कैलकुलेट करना सीखेंगे. प्लीज़ ये ना कहना कि 1 मोल CH3COH है तो इसका पीएच 1 होगा. नहीं नहीं, दिस अ वीक एसिड. येलो की तरफ होगा 4-5 होता है, इसका पीएच 6. ओके, सो ओके, तो ये 99% जो है सेम टू सेम रहता है, CH3COH रहता है, सिर्फ 1% आयनाइजेस. दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ वीक एसिड. दे आर दोज एसिड्स व्हिच पार्शियली आयनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. और पार्शियल का मतलब ये है. और मजे की बात है, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट करूं इसको तो इसका क्या रंग होगा? ज़्यादा किधर होगा? ब्लू होगा, ग्रीन होगा कि येलो होगा कि ऑरेंज होगा कि वायलेट होगा? It'll be more towards the yellow side. It'll be more towards the, क्योंकि एसिड तो है तो रेड, ऑरेंज और येलो में चॉइस करने. अब रेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑरेंज बस वीक है, येलो भी वीक है, तो इट्स आइदर ऑरेंजिश और येलोइश. ज़्यादा बेहतर है आप येलो लिख लें, ज़्यादा बेहतर है आप ऑरेंज लिख लें, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दैट्स व्हाट. अगर मैं HCl का टेस्ट करूँ तो HCl, अच्छा HCl का पीएच कितना होगा? अब एग्जैक्ट आपको नहीं पता होना चाहिए, बट HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ज़्यादा 1 pH होगा, मे बी 0, मे बी 2. यू नो, जस्ट अ सजेशन. ये मैं आपको तैयार करूँ सजेशन क्वेश्चंस के लिए. अगर मैं कहूँ सिरके का पीएच कितना होगा, आपकी सोच में कितना हो सकता है सिरके का पीएच? एनीबॉडी? कितना हो सकता है यार? 7 तो नहीं हो सकता, 7 तो पानी का होता है गाइस, प्लीज. 7 इज डिस्टिल्ड वाटर. 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है. तो कोई 4, 5, 6, 2, 3 ठीक है हमारे साहब, लेकिन थोड़ा सा करीब है ना आप स्ट्रॉन्ग एसिड. 5, 6 कह दें तो बेहतर है. 5, 6 कह दें. असल में होता विनेगर को जो वो होता है, क्या कहते हैं यार, विनेगर का जो पीएच होता है वो एक्चुअली 2 होता है. लेकिन वी आर गना से कि यार बस वीक एसिड है, ठीक है 4-5 है. हम तो सजेस्ट कर रहे हैं ना, आपसे एग्जामिनर तो ये नहीं पूछ रहे मुझे एग्जैक्ट पीएच बताओ, सजेस्ट कर रहे हैं. तो 4-5 ठीक है, वीक है. जैसे अब आपकी स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका 1 या 2 pH है. आपका विनेगर हो गया, ग्रेप फ्रूट विनेगर हो गया, आपका गैस्ट्रिक एसिड हो गया, लेमन जूस हो गया, ये इनका pH 2 होता है. हाँ, इनका 2 होता है. ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज जूस, सोडा वाटर, जो सोडा वाटर आप नहीं पीते, डकार मारे होते गंदे लड़के, तो दैट्स लाइक 3 pH होते हैं उनका. कॉफ़ी वगैरह जो है दैट्स ऑल्सो एसिडिक, बट दैट्स अ वीक एसिड. कॉफ़ी का pH कोई 5-6 होता है. एग योक्स, जो एग में येलो कलर का योक पाया जाता है, दीज आर ऑल फन फैक्ट्स. यू नो, एग योक जो है वो भी थोड़ा वीक एसिड होता है. टोमेटोज, बियर वगैरह, जिन बच्चों को बियर का शौक है, तो बियर इज ऑल्सो अ लिटिल एसिडिक. आर एसिड सावर, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड यूसरा. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आप कह सकते हैं, वो भी एसिडिक होते हैं, कार्बोनेटेड होते हैं ना. Egg yolk is an acid. It's not an acid. I said it's acidic. There's a difference. ये difference आप A2 में पढ़ेंगे कि acid और acidic में क्या फ़र्क है. Egg yolk is not an acid, माहा. It's acidic. Acidic का हमने क्या कहा था? जिनका pH 0 से 7 के बीच में हो, वो या 1 से 7 के बीच में हो. बेसिक कोई एग्जाम्पल दूँ, शमाल हो, बेशुमार एग्जाम्पल दे देता हूँ. शमाल, S for शमाल, S for sea water. Sea water is basic. Soapy water. You know, your detergents, ammonia solution, household soda, household baking soda, sodium hydrogen carbonate, baking soda जो आप खाते हो when you have पेट में दर्द, Gaviscon दवाई,
बेसिक गैविस्गॉन दवाई, पेट में दर्द होते हैं, पेट में जलन होती है. अब यू गाइज आर हाफ डॉक्टर्स व्हेन यू गाइज आर डूइंग ओ लेवल्स. आधे डॉक्टर्स हैं आप लोग. पेट में जलन हो रही है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. हालांकि दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इसलिए पेट में जलन होती है. ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे, मेरा काम ये नहीं. मैं सिर्फ आपको लॉजिकली बता रहा हूँ. पेट में जलन हो रही है, ओह एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, क्या कहूँ, बेस खाएं. तो बेस खाएं जी, बेस खाएं, गैविस्गॉन की दवाई देखें, दैट्स बेसिक. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ड्रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है. लिक्विड ड्रेन क्लीनर. ब्लीचेस जो हो गए वो भी बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. अवन क्लीनर. कितने और एग्जांपल्स यार, बस कर दो, इतने एग्जांपल्स देते, हर चीज़ है आपके इर्द गिर्द. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन लिख लें भाई. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की क्या डेफिनेशन होगी बताएं, आप खुद बताएं, मैं नहीं बताना चाहता. आपके कोर्स में इनकी डेफिनेशन नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करें कोई भी तो यही डेफिनेशन कॉपी कर लें. स्ट्रॉन्ग बेस, दोज बेसिस और दोज एल्कलीज which fully ionizes when dissolved in water. प्लीज गाइस 5 मिनट मेरे पास और रहें प्लीज. in water. And weak bases are those bases which partially ionizes when dissolved in water. जाहिर सी बात है अदीना, जाहिर सी बात है ना कि अगर तो ये फुली डिसोसिएट करेगा तो OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी. इसलिए तो ये वीक बेस है ना, क्योंकि इसकी OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. इसलिए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब फुली आयनाइज करते हैं तो ज़्यादा H+ बनते हैं, इसलिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. पार्शल आयनाइज करते हैं तो ओनली 1% बिकम H+, इसलिए तो वीक एसिड है. या बट देर वॉज अ प्रॉब्लम विद यूनिवर्सल इंडिकेटर. आखिरी बात है मेरी, प्लीज़, कहानी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट. आखिर अच्छा, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन इक्वेशंस फ्रॉम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर मैं डिसोसिएशन इक्वेशन लिखूँ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसी होगी इसकी इक्वेशन, फॉरवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करें. अगर वीक बेस की मैं लिखूँ NH3, इट्स अ वीक बेस, व्हेन यू ऐड इट टू वाटर तो उसकी अच्छा NH3 इज अ वीक बेस. बेस क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये इक्वेशन आप पहली दफा जिंदगी में देख रहे हैं, बताएं जी. NH3 इज अ वीक बेस. कैन समबडी सॉल्व दिस? नहीं पता कैसे करते हैं इसको सॉल्व, कोई कोशिश तो करें. अभी मैं आपको एग्जांपल देके आया हूं. अर्हीनियस से आपको नहीं पता लग रहा कि कैसे करूंगा, ये तो नाइट्रोजन आ गया. यूज ब्रॉन्स्टेड लोरी, दोनों सही है. ब्रॉन्स्टेड लोरी की सिंपल बात थी, बेस क्या चीज है? इट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. उठा के पानी से प्रोटॉन दे इसको. सो प्रोटॉन जब देते हैं यू गेट NH4 1+, और पानी से H+ चला गया, सिर्फ OH1- रह गया. सी, दैट्स हाउ ब्रॉन्स्टेड लोरी कैन कम टू योर एड इन योर पेपर. तो प्रेफर तो मैं यही करता हूँ, अर्हीनियस की बात नहीं. अब इधर आप अर्हीनियस नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों? क्योंकि दिस इज गैस. NH3 गैस. तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन किधर है? हाइड्रोक्साइड आयन कहीं नजर आ रहा है NH3 में? क्या आप करें हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करो, वो तब नजर आएगा जब आप ब्रॉन्स्टेड लोरी की कहानी इस्तेमाल करें. नाउ इट्स क्लियर शमाल, ग्रेट, अमेजिंग. अच्छा, वन मोर थिंग, आखिरी बस एक छोटी सी बात है, 2 मिनट लगेंगे. यूनिवर्सल इंडिकेटर वाज नॉट वेरी प्रिसाइज बिकॉज साइंटिस्ट को और भी मसला था. उन्होंने कहा चलो अब कलर्स तो हमें पता चल गए. येलो जो है, येलो इज अ वीक बेस, ठीक है, सॉरी वीक एसिड, सॉरी माय बैड. येलो इज अ वीक एसिड, बट इज इट अ pH 5? Is it a pH 6? Is it a pH 6.8? Is it a pH 4.7? Is it a pH 4.8? So that's why universal indicator cannot be used in our moles and stoichiometry experiments as well, because it is not very precise. It gives colors over a range of pH, not very precise. ये PTP में सवाल आता है, क्यों यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करते टाइट्रेशन में, आगे पढ़ेंगे भी. Because it gives color changes over a range of pH. वो exact pH आपको नहीं बताता. साइंटिस्ट ने कहा कोई मसला नहीं है, साइंस एडवांस हो रही है, come up with something known as the pH meter. So they came up with the pH meter and that's how they improved stuff. pH meter क्या है? एक मशीन है जिसको आप सोल्यूशन में डुबो देते हो, इधर इसके ऊपर रीडिंग होती है और ये आपको एग्जैक्ट pH बता देता है. That's it.
सो इधर तक हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह एसिड बेसिस में सिर्फ प्रिपरेशन रह गई, इसकी रिएक्शंस रह गए और टेस्ट फॉर आयंस रह गए। हाँ जी, ख़त्म हो गई। 2-3 बातें अगर मैं कर लूँ तो समरी के तौर पे व्हाट वी डिड टुडे वाज नथिंग न्यू। द ओनली थिंग वी लर्न टुडे वाज वी लर्न अ लिटिल अबाउट द इंडिकेटर्स। बाकी पुरानी कहानी थी, ब्रॉन्स्टेड लोरी की थोड़ी सी बात समझी और बाकी इंडिकेटर्स पढ़े दोबारा जो हमने मोल्स में ऑलरेडी पढ़ा था। टाइम ज़ाया किया है अपना। लिटमस पेपर पढ़ा, पीएच स्केल पढ़ा, कैसे बना था, क्यों बना था, कब बना था, कब तो मैंने नहीं बताया, आई डोंट नो व्हेन इट वाज मेड। और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज मस्ट बी एबल टू नो कि स्ट्रॉन्ग होगा तो रेड की तरफ होगा, वीक होगा तो येलो की तरफ एसिड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है बेस होगा वायलेट की तरफ होगा, वीक होगा ब्लू की तरफ होगा, इंडिगो की तरफ होगा। देन द डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस यू नीड टू नो दीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स वेरी कॉमनली टेस्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। ये दोनों तो हर दफ़ा अगर एसिड बेस का सवाल आता है तो व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड खामखा आता है। ये दो आज तक टेस्ट नहीं हुए, लेकिन अगर टेस्ट हो भी गए तो बस वो बेस जो फुली आयनाइज करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, जो पार्शली करते हैं उसको वीक बेस। कभी आज तक टेस्ट ना सिलेबस में मेंशन है कि डिफाइन दिस, तो अगर सिलेबस में नहीं मेंशन तो नई डेफिनेशन पूछेगी, लेकिन एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है फॉर एलिमिनेशन पर्पसेस, तो आपको पता होना चाहिए ये। देन आई शोड यू इक्वेशंस। सो दिस इज अ डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ वीक। डिसोसिएशन का मतलब अब इनको आइंस में शो करें, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, कब से हम यही कर रहे हैं। दिस इज अ डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ ए वीक एसिड। इसमें रिवर्सिबल। अच्छा, ये जिसको समझ ना भी आई ना कि ये कैसे 1 माइनस है, कैसे H प्लस, इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो फिर फर्दर समझ आ जाएगी। केमिस्ट्री थोड़ी इंटरकनेक्टेड है। तो वी आर डन। कल इंशाल्लाह रिएक्शन ऑफ एसिड पर, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें 3 दिन और मुझे चाहिए, 3 दिन चाहिए बस, फिर आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हो गई। फिर छोटे छोटे चैप्टर, सिर्फ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लंबा रह जाएगा, बाकी 2-2 दिन की है। नो मोर वर्क। अच्छा, मैं सवाल लेता हूँ। एनी क्वेश्चंस गाइस?